everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So this is me, Payal Toshan. I make beauty and fashion content on Instagram and YouTube as well. So don't forget to like, comment and subscribe to my channel. आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ all the birthday dresses that I have got or I have bought from different stores. Birthdays are really very special and you really want to dress up good, eat good and celebrate your birthday to its fullest. ये सारे recommendations है जो मैंने shortlist किए हैं अपने birthday के लिए. अगर आपका भी birthday nearby हो या फिर आने वाला हो, so you guys can take some notes from this video. So that is why don't forget to watch it till the end. So let's get started. Okay, so these are the bunch of dresses that I have ordered. So जल्दी से start करते हैं. I'll show you एक एक करके सारे. Oh god, so heavy. Okay, let's get started. So the first dress that I have with me is my favorite color of 2024 and I am still obsessed with it. It's a red color का dress. This is the dress. You might be thinking बहुत simple सा है यार, इसमें क्या ही है? But look at the back. This is a balloon kind of dress. And trust me guys, इसकी जो fitting है ना, it's so good कि ऐसे fit हो जाती है जैसे अपने glove पहन लिया हो. It's not that short, not that लंबा, but it's in medium and काफ़ी pretty लगता है when you wear it. And I think कि birthday के time पे solid colors भी बहुत अच्छे लगते हैं more than floral colors. मतलब personally I like to wear solid colors more than floral. I don't know, it's just my choice. But this dress is so pretty. I got this dress from Feminine AS. I think that is their username. I'll pin it over here. You guys can check it out on Instagram और उनका website भी है. वहाँ पे भी आपको ये same मिल जाएगी. इतनी भी तारीफ करो इस dress की. I don't know कम पड़ेगी because इसका color देखो. I don't know कैमरा पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इसका color. It's something between wine red and red. I don't know what do you call it, but so good. मैं सच में बोल रही हूँ, if you have your birthday in January, go for this dress. It's so pretty. I love it. It gives you that classy women vibe and I am up for it. Also the best part of this dress is इसके नीचे में इन्होंने already एक pant जैसा दे दिया है, you don't have to wear another shorts underneath it. So the next dress I have with me is a black bodycon dress. ये पूरी लंबी maxi kind of dress है, but इसमें special क्या है? The special thing is this, the buckles, and trust me, it gives candle vibes. If you have that bod, then I think this will go great on you. I wore it and it was looking really nice. I'm not that snatched, but this dress made me look like one, and I am sold for this. If I talk about the quality of this dress, then it's really good. I don't know what material it is, but I think it's somewhere between cotton. And they have a zip पीछे में and side में buckles. And नीचे का is very simple, but the one thing that I wanted in this dress was a slit. Okay, there's a slit, but वो काफी छोटा है. I think I can work around this. I'll anyway put all the links in my description box below, so it will be easier for you to find it. I think this dress looks really hot and cool only because of these buckles, because you can attach it and detach it anytime you want. Also, if you are not that person जो इतना reveal कर सके, so you can wear a black top inside it, a spaghetti top, and you're good to go. The next dress that I have with me is my dream dress, because मैंने ऐसी dress आज तक नहीं देखी है कहीं पे भी, and I was so happy when I found it. It is from some brand called Adya Clothing. It's their startup brand, and trust me, it looks so good. It is so pretty. I think I need to show you all. So this is the dress. Oh my god. Look at the work on it. Mind blowing. I love it. This dress is so pretty. I mean, अभी आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है इसके बारे में, but जब रात को आप ये पहनोगे और आप पे लाइट पड़ेगी ना, you are going to look like a disco ball. Not in a bad sense, but in a good way. You're going to shine when you wear it. And I think I'm going to wear this on my birthday. The material is really nice. ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है कि इसमें ऐसे तारे तारे लगे हैं तो आपको चुभेगा and all of that.
ऑल कूल है, बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको. Let's talk about the dress. They have a puffy sleeves over here. Not that puffy, but थोड़ा बहुत puffy कर दिया इन्होंने. And they have a gold gala over here. They have a zip. And the best part of this dress is कि इन्होंने यहाँ पे वेस्ट को स्नैच करने के लिए ऑलरेडी ऐसे ही इसको स्टिच किया है, जिससे अगर आप पहनोगे तो आपकी वेस्ट बहुत पतली दिखे. एंड दे हैव अ फ्लेयर हिप्स के साइड में, सो इट लुक्स रियली क्यूट एंड रियली प्रिटी. So the next dress that I have is, it's not a dress but it's a court set. तो लेकिन आप फिर भी इसको ऐसे पहन के दिखा सकते हो कि आपने ड्रेस पहनी है. So easy, so convenient. I got this from Leah Clothing. I love their collection. They have the most amazing collection ever. अगर आपको traditional चाहिए, western चाहिए, they have it all. This court set, it's in white color. So I'll first show you the top and then the skirt. So this is how the top looks like. They have a zip पीछे में and it is all lacy. इसके fitting के बारे में if I'll say तो ये मुझे काफ़ी tight आ रही है and I ordered my size only S. Also I love the fact that इन्होंने जो cord set के बीच में जो wiring दी है, it won't चुभो you. I mean, it won't hurt you when you wear it. But overall, this top looks really nice to me. I can wear it in many different ways. मैं इसको jeans पे पहन सकती हूँ, skirt पे पहन सकती हूँ. I can layer it up. Then आते हैं इसके skirt के लिए. So इन्होंने fish cut skirt दी है मुझे इसके नीचे. ये तो इतने अच्छे से fit हुआ है. I mean, amazing. This is how the skirt looks like. And I think ये जो detailing की है इन्होंने, ये रोज जैसे बना के, I think ये काफ़ी ज़्यादा trending है अभी. Everyone is wearing it and I really wanted to have my hands on it. अब देखोगे नीचे इन्होंने ऐसे detailing दी है जहाँ पे fish के जैसे कुछ दिया है. And it's a tight fitting skirt and it looks really good. काफ़ी लंबी भी नहीं है, आपके knees के नीचे तक आएगी. If I talk about the material of this dress, it's very हल्का, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ ऐसे heavy पहना है. ये शायद देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बट नहीं, अगर आप ये पहनोगे काफ़ी क्यूट लगेगा आपके ऊपर. एंड आप इसको रिजॉर्ट वेयर में भी पहन सकते हो. अगर आप लंच पे ब्रंच पे जा रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन वेयर इट. गर्ल्स आउटिंग के लिए भी पहन सकते हो. सो या, I love it. The next dress I have with me is so pretty. मुझे पता है मैं सारे ड्रेसेस के लिए pretty बोल रही हूँ because trust me guys, they are really very pretty. मतलब I have never seen dresses like these. But अभी जो मेरे हाथ में है ना, I mean, this is the dreamiest dress that you can ever wear. I really wanted to wear this. जब मैं छोटी थी, I really wanted to wear a princess dress. But you're never old to wear such dresses. This is so pretty. ये तो उसके ऊपर का है, इन्होंने ऐसे corset जैसा बनाया है. This is the dress. Oh my god. This dress is so pretty, so beautiful, so demure. Look at this dress. It's in pink and color और नीचे में इन्होंने ऐसे gradient कर दिया है purple and pink को mix करके. And मटीरियल इसका काफ़ी लेसी जैसा है. इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये काफ़ी थोड़ा भारी है. मतलब इट्स हेवी टू वेयर, heavy to carry. Otherwise everything about this dress is so dreamy. I love it. They have this detail over here जहाँ पे इन्होंने ऐसे काट के ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं with poles on it. And ऐसे corset जैसे दिया है. नीचे में तो इन्होंने ऐसे flowy सा मटीरियल दिया है. I think it's some लेस जैसा कुछ लगाया है. I got this in the size S from Leah Clothing. I told you Leah Clothing, you're doing fab. So ये भी मैंने सोचा था अपने बर्थडे पे पहन लूँ. I don't know, maybe I'm confused between that black dress and this one. You guys let me know in the comments मैं कौन सा पहनूँ अपने बर्थडे पे. I think ये वाली भी बहुत अच्छी है. So let me know in the comments. I am in love with it. I think I'm going to wear this again and again. ये वाली वैसी ड्रेस है जिससे मन ही नहीं भरेगा आपका पहनने के लिए. The only thing is missing is that pole thing जो मैंने वेबसाइट में देखी थी, बट वो मेरे इसमें आई ही नहीं. So I don't know what was that. But otherwise जैसा मैंने इंस्टाग्राम पे, जैसा मैंने उसकी वेबसाइट में देखा था, सेम वैसी ही ड्रेस आई है. And I'm really happy with it.
Cute. So the last dress that I have with me is this dress. It is also very dreamy and एकदम full say fairy vibe, Tinkerbell vibe आएगी आपको. So मुझे ये किसी international brand ने as a PR भेजा है, and the username of that brand is Lace Made Official. I love the collection. भाई क्या collection है उनके पास. It feels like कि मैं ऐसे एकदम cottage girl वैसी vibe में आ गई हूँ, and it is so good. So this is how the dress looks like. I mean, look at it. इतनी pretty dress. सबसे पहले तो आप इसकी डिटेलिंग देखो यहाँ पर. My God, you know, बिल्कुल भी कैमरा में इसका कलर नहीं आ रहा है, but it is in soft baby pink soft color. It is very soft. Also, it is softer than that earlier clothing वाली dress. It is very soft. It is very flowy as well. Look at this. Very flowy. My God, look at it. इन्होंने पूरा लेस का वर्क किया है यहाँ पे. दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ओवर हियर. यहाँ इन्होंने स्लीव्स पे भी थोड़े थोड़े ऐसे लगाए हैं ग्रीन कलर के, एंड आई थिंक द कलर कॉम्बिनेशन पिंक एंड दिस ऑलिव ग्रीन इज लुकिंग फैब. इन्होंने ऐसे कॉर्सेट ड्रेस बनाया है, सो दे हैव अटैच्ड पैड्स ओवर हियर, सो यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग इनसाइड. एंड अदर देन दैट दे हैव गिवन काइंड ऑफ ये एडजस्ट करने के लिए. तो आपको अगर स्नैच्ड वेस्ट चाहिए एकदम कॉर्सेट जैसी, तो यू कैन डू इट विद इट. अदरवाइज यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे लेस लेस लगाया है. सो overall this dress screams Tinkerbell. I don't know why. It's in the size S. एंड ये मुझे काफ़ी जल्दी रिसीव हो गया था. मैंने ये 10 दिन पहले दिया था, 10 दिन के अंदर अंदर आ गया. एंड ये भी मैंने कस्टम मेड बनाया था, मतलब उनको ऑर्डर देके बनाना पड़ता है. मैंने एक और ड्रेस ऑर्डर की थी इनके वेबसाइट पे जो अभी तक आया नहीं है. दैट वाज इन पिंक, सॉरी दैट वाज इन ब्लैक कलर. बट एनीवे कोई बात नहीं है. This dress looks really cute. I love it. I know I love all of that. I'm using love word in this whole video, but I cannot help myself because ये बहुत सुंदर ड्रेसेस है. मैं पता नहीं क्या करूँगी इन ड्रेसेस का. I love it. I love it. I love it. Okay, guys. So that's it for today. That was my birthday dresses haul. I hope you guys like it. And please मुझे comments में बताना which dress should I wear because I am really very confused. ये सारी dresses इतनी ज़्यादा pretty है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ. मुझे लगता है अगर मैं ये पहनूँगी तो मे भी वो भी पहन सकती हूँ. एक दिन में तो 4 ड्रेसेस चेंज नहीं कर सकती मैं. But please let me know in the comments क्या पहनूँ मैं. Please help me your girl out. And I'll see you in the next video very soon. तब तक के लिए take care. Bye bye. And please don't forget to like, comment and subscribe to my channel.